So hope everyone is able to see my screen. Yes, Deepak. So first of all, right, anyone have any query, question, right? If anyone tried something yesterday related to right playbook and has some caution, right, or any thought or caution that have you come in your mind, right, related to Ansible playbook, we can discuss right before getting on to this provisioning lab. If not, then let's right get into the lab. So first of all, right, for lab I need right basically, for example, you if you want to do this lab, right, obviously you need the code base. So you can always right go to this Ansible projects of me my right in my GitHub and clone it right to your local machine, right, or wherever your Ansible master is. So see, this is my Ansible master machine, right? Yesterday we had used right our playbook right project to right deploy a web server in remote machine. So today we are going to do provision, we are going to create instances right as per the need. So I have did what, I have cloned this Ansible project. So after cloning, right, I can see that folder right would be here, right? Ansible projects. So let me go inside that project. In this right, this is easy to launch, and easy to launch we have Ansible AWS provisioning, right? This is our the you can say the project main project folder, right? Inside we have these files basically was provision.yaml, right? Provision.yaml is our actual playbook, right? Through which we will be provisioning right our instance, and we know right how this provision YAML are actually using the variables, right? So for example, if we see this right, I will list this provision.yaml. Then you can see right the var files contain all the details right which is required by the modules right which we are using in our tasks. So basically our tasks are segregated in two parts, right? Before creating machine we are creating what, EC2 group, security group, right? And this security group we are creating from a variable right which is defined where in this dev environment.yaml, right? In this there is a security groups variable defined, and a security group is a kind of a right variable which contain list, and list contains right there right you can say specific items. Again, list contains a list, and we are rotating over these variables right security groups and getting what, the value. For example, the name of the security group. To create a security group we need to pass right this all parameters. So obviously if we want right how about right how this basically module works, so obviously Ansible module, right, you can look for EC2 group, and if you go to this right page, the EC2 group module, right? So you can see, right, what are the parameters basically, right? This specific, right, function, and I think someone is waiting on the room. Let me pull them in. Yeah, they are in. So we can see, right, there are certain parameters which are required, and the purpose of this particular module, right, is to maintain EC2 security group, which means, right, it can create also security group, right? And these are the various variable that you might use and which we are using in our code also, right? And examples, right, are also given right below, right, how to create a security group. So basically these are the right parameters in which there are certain parameter which could be mandatory, right? There are certain parameter which are optional. Now for example, right, name, right, is an important parameter, right? You want to give, else right it will get some default name. So now VPC ID description, right? These are all optional parameter because right, but if you don't specify VPC, it will right get attached to a right a default VPC, right, or created in a default VPC. So which profile you want to attach? So profile is basically the credential through which you will basically log in. So I can right use my access credential key instead, right, like this, in through which also I can create or I can use right AWS profile. So this is a various example rules, right? Which port that you want to allow right in your inbound outbound. So those are your rules. Basically, you specify which right protocol that you want to use, what port that to use. So that is a similar stuff, right, which we have done right in our right basically right creating this EC2 group. Okay, and I see someone waiting. Saket, okay. So now we can see right we are
taking these values which we require, right, like rules, description, reason, which are defined, right, pretty right in this dev environment.yml. And we for also, right, launching an EC2 instance, we need certain, right, variables which we have defined, right, in this variable. And this is the way, right, we have sourced this variable in our main YAML, right, from where I created a key called var file so that I can, right, process all the, right, variables defined in that right particular file. So the path of, right, the variable, right, YAML file in which, right, variables are stored, I have sourced it. So now the task can consume, right, those variables. Okay, now in a term, right, it's very straightforward, right? I need parameters, and right, if I want a configurable code, right, so where I don't have to change my main provision.yml, I will create certain, right, variable folder in which I will maintain my variable. So there I can change rather than changing my code again and again. Now this is typical simple example where I'm just creating security group, and right, you can say EC2 instance. Now think if you from Ansible you want to create a VPC or, right, other entities also. Now your playbook will grow, right, big. And in that case, right, if you're hard coding, so every time, right, if some change comes, you have to make change in your code. So it's very good, right, to make either your code parameterized, right, or, right, a variable, right, way, so that variables can be, right, changed separately rather than changing the code. I hope this, right, what I said, you understand, right? This particular practice, right, which is a standard practice. Everyone, right, is in line with what I said or not? दीपक, ये wars underscore files ये मॉड्यूल है या फिर मतलब कुछ? So it is a keyword like task. Task is not a module, right? Module is ओके, what? EC2 group. So where files is a key which is understood, right, by Ansible, right, when you pass it or write it in a playbook. It understand, okay, I will use my variable files from this, right, folder, right, which you are specifying where files key. ओके, so it is an inbuilt, yeah. Yeah, inbuilt key, right? Okay, Right, like name, task, handler, right? This is the, okay, it basically. So you okay, can got it. see, you can think like this. If you think like them like a person, like task is a person, right? Where files a person, right? So obviously they have what, some roles, right? Where files would have what role to define what variables or Variables. store variables, right? So task would have what role to define the actions, right? So actions like, right, creating or provisioning, right, some stuff, right, or installing, right, some utility, correct? Yes, yes, got it, yeah. Anyone, any, right, thought, because we had discussed this earlier, right, in terms of, right, what, how, right, variables are stored where, but I'm just, right, doing a small recap so that you can understand, right, you would be in line with this lab. Is this clear, guys, everyone, this part which I said? Yes, sir. Okay. So to move ahead, right, first of all we need to check, right, our what are there in vars basically, right? So let's go to vars. And first, let the credits, which is very important. Without that, right, how I will able to basically interact with AWS, right? So in my creds .yml, if I see, right, we have EC2 access key and EC2 secret key, which I need to, right, define. So where I will go and generate this EC2 access key and secret key? Anyone? Obviously AWS instance, IAM. right? In Yeah, console. console. So I will go to Hmm. IAM service, correct? Yes, correct. And I can create a user. There is, right, one user created earlier, so I will delete it. I'm not using it, so I will delete it, and I will create a new user, right? Some different names here. Oh, someone is waiting, maybe. Okay, if I add user, so say example, this is my, right, infra user. See, I called it a user called infra, right, and I just gave it a programmatic access, no console access permission. And right, there is a group that I had created, say DevOps, right, which has administrator access. If I put my, right, user in that group, so obviously it will use, right, all the permission. But say I don't want to attach to that group, and right, attach existing policy. So what would be the sufficient policy, right, rather than giving administrator access, so that, right, my EC2 full access. EC2 full access, correct, right? So even giving EC2 full access will suffice because I am dealing with what, EC2, right? Creating security group and instances.
I hope everyone understand, right, what I mean to say. Though I'm using Yeah. administration access, right now I'm moving to tags. I'm not putting any tags. I'm reviewing, right, and I will create user. Now these are my right keys which are generated. I will maybe right. I will copy them directly and go to this console here. Vi. Don't share this right key with anyone. Right. Don't display it right anywhere. Just like I'm doing, because I will delete it after my lecture. Okay. This user. So never do The, that. Even not commit it. Okay. Yeah. Yes. Someone is asking some. yeah, Deepak, can we encrypt this access key ID as well while copy pasting in that particular file? See, Because so basically, right, we can do right and using vaults, right, encrypt. If you're saying right, copying only directly right encrypted, I need to right to basically right use Ansible vault command to read right my encrypted. So if you see right in oh, the comment also written the entire file right that you have right creates can be right encrypted. So I might have created this file earlier, right, and right over using Ansible vault I have encrypted and I had passed this file so that right whenever this right file have to be used by Ansible playbook, it will itself decrypt it and right use the actual values. So okay, there are great detail right knowledge bases written. Right yesterday also we have discussed a bit, but let me show you again. So go to Ansible vaults. It's not important that you should use Ansible vaults only, right? While using Ansible to right decrypt, not necessary. You can use any vault technology. Okay. So Ansible has given right a purposeful right because Ansible might need right to pass password. Even not for this example. For example, if you want to connect to an instance right using password, not without keys, right? And right you have to right pass password right whenever you will run. So you can right keep your password right encrypted in some file or right you can encrypt and you can use it right. So this is right various right related tutorial that is given right how to do that and how to use with playbook also is given. Now file level encryption right is there right? So how you will right do file level encryption and how you will use them right basically is written right Ansible vault create .yaml right in which right you can pass some value right which is encrypted, then how you can edit an encrypted file using Ansible vault. Okay, so these are various examples which are given which you can write line by line try right and use right and then you can write apply it into your playbook commands also. Okay, okay. Hmm. Deepak, your voice is quite low. is it better? I will Yes, try to be loud. yes, yes. Is it now good? Yes. Thank you. Thanks, Vishal. Now I will jump back to right this slab. So I have copied right both my access key and secret key. Right, hope they are right properly copied. Or also I was saying right since you are doing lab right and you are cloning right from a rep and you will try to commit it, please while commit it right mask it right or right delete your credentials, never commit and get right with your AWS credential. There are crawlers which can right utilize your right access key and secret key, so that will might right create problem. So be careful right in terms of committing the changes we are right putting your right labs in your own right repositories and Git. Now, since I have done this right credentials part, now there is another set of variable file right in which right I have to again right put some changes. For example, I want to right create my instances in which region? Say North Virginia. Generally, I use North Virginia right now, right? So I will use. I want to use an existing key pair. So my existing key pair where I can found right if I go to my AWS, my EC2 dashboard. So every region have their own right key pairs. You cannot use if you're writing US East one region and you are using key pair of US East two, then right it will not work. Right, definitely it will fail. So it will not able to find the key pair right in that particular region. So be careful right in that case also. From here right I have these three keys. I can use any of them. Generally I use right DevOps learning. So I will copy this right and will change. So you don't need to write a .pem file, .pem extension to instance keeper here, right? It's just the name.
Okay, and then right, what image ID that you want to create. Say for example, right, I want to, so image can be right from the AMI's page you can write get, or you can also write get image from right while launching an instance, right? You get right your community AMIs. Don't use right subscription right from the marketplace one. For example, I want to say Amazon Linux that I want to launch, so I can copy this entire right image ID. And remember, there could be image ID which are right different right in different regions because they are region specific, right? So might be right this Amazon right AMI ID which I'm using is different in right some other region. So obviously use the one you are right want to create in whatever region. So this and this right should be right present in the same region right which you are using US East one. So this AMI should be present in US East one region. Uh, is this fine? You understood, guys, this part? So I defined these three important variables, right, which will be consumed by my main provisioning.yml. Correct? Yes. And Now, Deepak, that EC2 underscore region is one of the availability zone in our region, right? you can say yes. So it is basically right reason and inside region there are availability zones. So it will choose right while creating whatever right availability zone right it will use. I'm just specifying a right region right inside this region there are availability zones. So for example, this North Virginia is what a region, right? And inside this right in Virginia there could be multiple right availability zones like US East 1A, 1B, 1C. So you don't have to specify what availability zone, you have to specify what region. So we have specified what region. While creating instance right in automated way, right, one of the availability zone will be chosen. If you want to restrict right, so obviously while creating your instance or security group right, you can specify right availability zone also right as a parameter. Got it, Vishal? Yes, Deepak, yes. Now, as we know, right, security group needs this parameters, and right, we want to pass, we want to create right two security group, right, different security groups. So let's make ensure this security group SSH and web does not exist, right, in our right AWS account, because we want to create it fresh. So obviously, I will go back to my EC2. Okay, I will go to my security groups, the network and security. And here I will search for SSH and web if are there any right SSH. So I can see SSH. Guys, give me 1 minute. Someone is at door. So let me. Hello, I'm back, guys. Okay. So it was like gaadi wala aaya. Sorry, it's getting recorded too. Okay. So see, I don't want this SSH because with this name, right, I'm creating. So I'm going to select it and delete it. Okay. So in actions, where is delete? ओके नीचे होगा हाँ ठीक है तो ये मैंने SSH सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट कर दिया है और दूसरा एक वेब भी है उसको भी हम डिलीट कर देते हैं वेब नाम का भी है let's delete it and we will check again right whether we have this SSH and web security group present or not. So we will delete it and now let's search both of them one by one. So if we see SSH, there is no SSH. If I search, right, I can see SSH only and SSH demo, right? No SSH security group when I'm searching keyword SSH. Similarly, if I'm doing web, I think your voice is getting low.
My voice is low, or is it better now? It's bad. Okay, so I had adjusted my mic. So now we can see also, right, the web is also not present, right? So it's a web demo, but not web. So we can, right, had cleaned up so that we want to create with the same name what is there in our, right, variable. So obviously SSH and web. I can change this name if I want, right? But I want to keep it. Therefore, I deleted, right, in the AWS account. Now, so these are the information related to security groups, right? In web, I want to create, try to inbound, TCP inbounds 80N 443, and in jump host, right, I want to use, right, 22. So in that way, I have done the description also, and with that description, it should come. Similarly, EC2 instances, right? I already have provided the information like image ID, right? Instance key pair, right? Which is already defined, and I'm just interpolating them using this way, right? This is how the variables are interpolated, right? In Ansible, right? Two curly braces and your variable name, and you know this variable name is already defined here, right? Instance key pair. Okay, everyone got this part, this thing, right? I hope no one is Yes, waiting. yes. Yeah, perfect, cool. Now we are good, right, in terms of having our, you can say, artifacts in terms of credentials and, right, variables which are defined for our playbook. Now running a playbook is the same way, right? We will run, we will go where our, right, playbook is. Our playbook is here, and right, our inventory file is this get host, right, in which, right, we are using the local host connection, right? So we had defined just local host, and we are using this local host directly in our host, right, in our provision.yaml, right? So obviously I need just what, an internet connection, and through internet I will try to connect to AWS using those credentials, and then I will try to, right, spin up the machine. Now let's do one thing more, right, with our variables. So we are var dev environment.yml. See, we want only one jump host and two web hosts. So there is a count, right? If you see exact count. So the jump host that we want is only one. So let the counter be one. But for, right, web, let's right, speed up two web machines. So I will change this to, right, this two. So this, in this, using this counter, it will create that many number of instances. So it's very similar, right? While creating your instance, there is an option, right? How many instances you want to create of this configuration, right? This is the same exact count, right? Is right, an automation key for the same purpose. So I saved it. Now I'm going to run, right, my playbook. So Ansible, so playbook minus I. Our inventory file name is what? Hosts. And right, our provision.yml is, right, our. So first, right, we can do a dry run. How to do a dry run, guys? Hyphen check. Okay, so it will do validate our YAML, right, and other things, right? Let's see. So it's saying, right, yeah, we can, right, able to create. So it's looks like, right, security groups will be created fine, because it has checked, right, it can create. And the launch instance, it has skipped, right, because of the launch is an action which will be created. So it is skipping, it will not try to create an instance, right? But yes, as per the entire YAML, right, it looks good. And if we go here, right, and look for SSH, it is not created. It was just a dry run, right? So we can search, right, again, SSH, no SSH, right, security group which is present here. So it is not created, it was just a dry run. Now let's remove this and, right, do the actual execution. Now it is taking some time, right, creating security group, and right, it is creating. Now we can search here, right, SSH, still not created. We will search again, still not created. We got an error. So what is an error here is an exception occurred during the to see the full trace break. So instance creation, the key pair, somehow it is not saved, or my code has some hard coding. I mean, well, let's see that if SSH again, right, because that part has been done, right? So SSH key, yeah. Luckily nahi aaya, okay? So obviously, let's see, right, where in the code there is hard coding. It sees, right, key pair, it is using Deepak 2717, and it doesn't exist. So it is somewhere, right, hard coded in our
right? Main YAML. So vi, let's see provision dot YAML. Here is it somewhere you can see Deepak 2717. No, I don't see, right? There is any hard coding here also, right? मेन फाइल में दीपक था, वहाँ पे कीपैड दिया था आपने। Okay, जो where फाइल हाँ, में वैस उसको चेंज किया था ना मैंने, नहीं हुआ चेंज, वो सेव नहीं हुआ, और हार्ड कोडिंग था कहीं पे। यहाँ पे नहीं, जो मेन फाइल थी ना जहाँ पे पूरा ये किया था, हाँ यहाँ पे हाँ यहाँ पे। ये मेरे चेंजेस तो कुछ गए ही नहीं, आई थिंक मैंने सेव ही नहीं किया इसको, करेक्ट? I think you've missed it. Yep, 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 yep. So this is the reason, right? It failed. So let's do it carefully now. So first of all, DevOps learning. So I will go to my dashboard. GPS. Paste it. And then go to instances. Launch instances. This AMI ID, I need it. Cannot use old AMI ID because they would not be present. To use the present one, or which you want to intend to create, right? That AMI ID should be present in AWS, right? So let's save it. This time I have saved it. Okay, now I will run it again. So first of all, I want to see, right? Change happened, right? And with the SSH name, and I'm okay. It has created where? कहाँ पे create किया होगा SSH और web को? यहाँ पे नहीं मिल रहा US East 1 पे, है ना? तो कहाँ पे बनाया इसने? US US East 2 is में बना 2 दिया, राइट? तो हम देख right. लेते हैं यहाँ पे जरूर पक्का बन गया होगा, क्योंकि उसने चेंज एक्शन तो दिखाया, राइट? तो कहीं ना कहीं तो क्रिएट किया है उसने। तो लेट्स सी फर्स्ट, राइट? यस, सिक्योरिटी ग्रुप हमारा बना कि नहीं बना। C2 इन ओहियो रीजन हम लोग गए हैं, और यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे 3 सिक्योरिटी ग्रुप दिखा रहा है, और आज के डेट पे SSH और वेब, है ना? ये देखो, SSH और वेब नाम के 2 सिक्योरिटी ग्रुप, राइट, क्रिएटेड हैं। देखते हैं इसका इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन टाइम कहीं दिया है इन्होंने? ये कहीं नहीं, क्रिएशन टाइम मेंशन नहीं करते क्या ये? लेट्स सी, नहीं, ये मेंशन नहीं करते क्रिएशन टाइम, बट ये बना, राइट? सो दिस इज द राइट हाउ इट हैज बीन क्रिएटेड, राइट, बाय द Ansible. So I will delete them again, ठीक है? So यहाँ रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रखने में कोई बुराई नहीं है। हमें चाहिए कि हमारे उसमें बन जाए, है ना? कौन से रीजन पे? US is 1. 1 पे बनना चाहिए। तो यहाँ इसलिए रीजन स्पेसिफिक है, राइट? ये कंफर्म कर, राइट? इसे तो हियर वी डू नॉट हैव SSH फॉर श्योर। दीपक, ये मैन्युअली डिलीट करने से मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? टर्मिनल पे डायरेक्टली हम जो भी क्रिएट हुआ हो उसको ड्रॉप कर सके? कर सकते हैं, same thing, right? Like terminating, right, instance, right? There is a module, right, to terminate security group. Absent, right, is the generally the keyword, right, while to terminating or removing anything. जैसे अगर आप यहाँ EC2 ग्रुप में जाओगे, तो हमने मॉडल पेज खोला है, राइट? इसमें टर्मिनेट के लिए भी आपके लिए होगा, राइट? लेट्स सर्च एब्सेंट, इफ यू सी दिस, राइट? अगर आपके पास ग्रुप आईडी है तो यहाँ पे आपको क्या डालना है? एब्सेंट डाल देना है, तो वो ग्रुप आईडी, राइट, जो भी आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है, राइट, वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, राइट? तो ये आपको आइडेंटिफाई फेच करना पड़ेगा, राइट, इन्फॉर्मेशन फॉर डिलीटिंग ना, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप करना है, उसके लिए ऑटोमेशन लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप ec2.py स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, है ना? अगर रन टाइम सेलेक्ट करना है आपको, कौन से सिक्योरिटी ग्रुप, उसका नाम, है ना, फिल्टर से निकाल के आईडी निकाला, आईडी निकाल के देन यू कैन अप्लाई दिस, राइट, इन द प्लेबुक। Got my point, right? Yes. Okay, now let's, right, come here and we see, right, while SSH there is no, let's go and run the playbook. It's important. Let's run it again.
creating, right? It has been created. So now we can search. Meanwhile, instance are also launching, right? So let's go here first, look for SSH. इसको यहाँ हटाते हैं और यहाँ पे वापस SSH सर्च करते हैं और इस बार हमें SSH दिखेगा। देखो यहाँ पे SSH। सिमिलर वे हमें यहाँ पे वेब भी दिखेगा अभी, ठीक है, वेब भी बन गया। और अभी हम जो इंस्टेंस देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा पेंडिंग या लॉन्च स्टेट पे, राइट? इंस्टेंसेस कुछ आ रहे हैं। देखो एक डेव जंप होस्ट नाम का, राइट, आ गया। अगर रनिंग हटाते हैं तो कुछ वेब, ये छोड़ दो, वेब 02, ये जो देख रहे हैं दो पेंडिंग स्टेट पे है ना, ये भी लॉन्च हो रहे हैं, राइट? ये हमारे वेब होस्ट है। एक जंप होस्ट हो गया है और वेब होस्ट हो रहे हैं, फिर उनका भी अपना नेमिंग कन्वेंशन जो भी है, राइट, जो दिया हुआ हमने टैग नेम, वो भी आ जाएगा। Just taking the time to come up. So now see their tag, right, web करके वो दोनों यहाँ पे आ गए, दो instances with the name web, right? And this is how, right, we are able to spin up, right, or provision, right, 3 instances. And if we go to Jamp host and see the association, right, in terms of security group, तो इसके साथ कौन सा security group attach किया हमने? सिर्फ SSH, है ना? और क्या पोर्ट अलाउ किया इसको? सिर्फ 22। बट अगर वही वेब में देखेंगे हम लोग तो कितने सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हैं इसके साथ? 2 सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है, राइट? SSH एंड वेब, जो हमने कल डिस्कस भी किया था, राइट? इन कैसे वो अटैच कर रहा है, राइट? इन सिक्योरिटी व्हाइल क्रिएटिंग इंस्टेंस, राइट, with the keyword called group, right, we are attaching both SSH and same, right, same configuration, same instance, right? And right, web में यहाँ पे हमारा, right, 80 और 443 पोर्ट भी और 22 पोर्ट बिकॉज ऑफ SSH सिक्योरिटी ग्रुप, ये तीनों आ गए, राइट, वेब होस्ट पे। So see how this we can use Ansible, right, for provisioning. So generally we say that, right, Ansible is more, right, inclined toward, right, application and server configuration aspect, but we can do provisioning also. But yes, it is not that matlab simple, right, or straightforward in terms of, right, managing infrastructure using Ansible. We can do that, but there are a lot of challenges also, right? Now, for example, the state, the way, right, the state is maintained, right? For example, the launch has been done, right? If I again execute this, so what will happen? What will happen? वो चेंज happen I think, yeah. Security group तो बने हुए already, right? हाँ, तो देख लेते हैं, right? वो क्या होंगे? वो ओके स्टेट में आ रहे हैं, है ना? इवन होस्ट को भी उसने क्या दिया है? ओके स्टेट में दिया है। इतना तो उसने, राइट, मैनेज किया है कि भाई ये ऑलरेडी बन गए हैं, राइट, विद दिस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बन गए। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रॉय कैपेबिलिटी की बात करूं, राइट, which is not there with Ansible. So destroy capability means what? If I want to, right, remove this terminals, right, which I created, then how I should proceed ahead? I have to write what? Extension in my code, right? Or a termination logic in my code, right? In my, right, infrastructure code. So Yes. whenever I will call that right, termination YAML, then it will, right, terminate or destroy everything which I have created. And if you compare to Terraform, Terraform doesn't need that. Terraform maintains the state file. Okay, and using that state file, if you use the keyword destroy, it will understand whatever it is created, it will destroy from that state file. You don't need to, right, write another, right, termination code or termination, right, playbook for that. You got the point which I mean to say? Hello everyone? Yes. Yes. Perfect. Now I will refresh it, and I don't want to keep running multiple machines, right? So what I will do, I will remove this web 0 and jump host and web, एक web में उड़ा देता हूँ, ये 3 में उड़ा देता हूँ। इसको हम terminate instance करते हैं. Now I would ask everyone, right, to extend definitely this code in terms of, right, provisioning, right, other entities of AWS, and also, right, include a termination script, right, of EC2 instance, right, in the same YAML and run it. Means basically using what? Which condition? EC2. Tag. EC2. Using a tag. So use a tag. So whenever you want to delete or terminate, right, so just run that using a tag called terminate, right? So you have everything in the same code, creation also and, right, termination also. And right, in your action you have used a tag called terminate, and when you run your playbook with the terminate tag, it will not call the creation, but it will only do what?
termination part. You got my point, guys? What I mean to say. Yes. So do try those automation, right, to understand, right, everything. And one more thing that I will, right, give you an assignment, right. It's a very complete end-to-end project, right, on Ansible. After, right, teaching you about roles. Okay, after this. So, but everyone understood, right, how provisioning is done. So we know, right, we did, right, installation, configuration, and orchestration yesterday. Now today we, right, also learn how to do, right, provisioning. So you understand the aspect of provisioning or not? What which I want to, right, pass on you with this lab. Yes. It requires what? It requires understanding of what? Module, right? Which module in cloud or any other on-prem, right? Which is able to, right, do something related to provisioning with a parameter that you pass. Obviously, you need to be aware of your infrastructure at front, right? And then use, right, those values, right, to provision or create those in your infrastructure. ना जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हम लॉगिन कैसे करते हैं, है ना? फिर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर EC2 क्रिएट करना है तो मुझे क्या क्या चीजें पैरामीटर पास करनी, वो कहाँ से आप स्टडी कर पाओगे? आप आपके एंसिबल के मॉड्यूल्स के उस मॉड्यूल जो ये एक्टिविटी करेगा या एक्शन करेगा उसको स्टडी करके समझोगे, एंड देन यू विल राइट इन योर प्लेबुक. एग्री एवरीवन ऑन दिस? Yes. परफेक्ट. ओके. यस, एनी क्वेश्चंस? Deepak, if you wanted to create a user also via Ansible, we can do, yeah? यस. Which we created manual user. Even a Unix user, even, right, whatever, right, user, right, we can do create. We are able to. It is merely what the different approach would be there. Either there would be a you can say a module which is already written, right, just you have to call it and pass the parameter, or maybe you can use, right, certain script, right, or call that script to create or do that activity of creating user, है ना? एक Even तो direct. AWS, हाँ, Yeah. even AWS management console पे भी user create कर सकते हैं ना Yes, already. yes, 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 definitely. If you go, right, in, right, cloud modules of, right, Ansible, here, right, in there would be, right, basically a module, right, related to that also. Let me go to mm, this page. So these are the modules, right? So if you go to related to IAM, right, definitely. Let's go. VPC EC2 से related है, right? AWS का IAM से related हमें चाहिए, AWS underscore IAM. So AWS secret, AWS EC2, ये resource actions. रुको, I will go to, right, index page. वहाँ पे हम identify कर सकते हैं. Ansible module index. तो वहाँ पता चल जाएगा कि yes, there is a module or not, right, for that. Go to this aggregation called, right, cloud modules. Here, right, you can search for AWS IAM or something, right? AWS API ACM BCD FG. I cannot see, right, with the name called AWS Yeah. underscore IAM, but there would be maybe, right, or there is no, right, module, right? So obviously we have to do in a different way then. So using Python, right, we can do that, though, right, using Boto library, right, calling them, right, in that way we can automate. Yeah, yeah. So there are limitations, but let me check if there is something with a different name. I don't think so. Okay, there is nothing, right, related to. Yeah, I don't think, right, currently in this list of AWS, right, modules, I cannot see, right, there is something related Yeah, to, yeah. right, I so am this user. C2 का बहुत सारे ये है ना, IAM भी है भाई, with IAM Okay, name, I right, am. IAM, right, I am IAM okay. group, yeah, this is IAM user, right, so this one you Yeah, can use, and examples would be there also. So in a way, right, behind the scene it is using Boto library only, totally. right? So this IAM user name, state, whatever, right, and then also you can attach a managed, right, policy Policy. also. So you can automate using Ansible also. Okay, got it. Okay. Okay. Any more queries, question, guys, before jumping to roles?
If not, right, let's understand right rules in a very right different way. I had right told you while right discussing right one query related to one of the topic, right, about if right where files right is a module or not, right. At the time I told right there are certain right keys which has their own responsibilities, right. So these roles are not related to right what we say right administration, user administration role. I'm not talking in that term. So the rules that I'm talking in terms of Ansible, right, is more related to right what kind of actions which are there we are performing, or what kind of right activities that we are performing are termed here as a roles. For example, uh, doing a service restart, right, or service handling a service, right, is one of a role of someone, right, who will do that, right. For example, handler has the responsibility, right, of doing that, right. So I will write basically rather than right keeping it in the playbook, right, मैं playbook में handler keyword use करने के बजाय मैं क्या करूँगा, I will segregate it in a different right manageable way, right, so that I can define a folder called handler, and handler will take care of this particular right responsibility, in which right I can create my separate YAMLs, in which right I will be right defining right the action to do. So I took this example right in a very broader context to make you understand the roles here are nothing but you can think like a folders, and those folders have their responsibility. For example, if I see this playbook, let's go to my Ansible project, right, and let's open the same playbook. Now, if you see right, this playbook has multiple right actions, and right, and if you see right, there are certain installation actions are also there. And I have to add another action. So every time I have to go what I have to open write a playbook YAML and continue editing and right attaching more actions to it, right, as per my need, as per my day 1, day 2, day 3, day n changes right are coming up in that way, right. I'm actually populating my provision.yaml, right, and it will grow such big, right, that at certain right at certain time it becomes little right not properly manageable, because if I have to change something related to say group, right, and I am opening right, it has everything related to VPC, IAM and everything, and I'm just want to change EC2 group, but I have to open this entire right provision.yaml to right manage properly. They come up with the concept of roles, and roles right basically is saying that why not we break up this right a big playbook into small chunks, and we will not right just create right small right multi-party YAMLs. Rather than we will right give some roles responsibility to certain right keywords or actions that they will do. For example, task itself will be a folder, right. Wares itself will be a folder. Okay, handlers itself would be a folder, and we will also create other folders related to right information about project, like who built that project, what is the platform that project use, right. So I will manage my project in a very proper way, and in that way right anyone can come and directly understand and right you start using that project also, right. If it is very common use cases, like I'm using a modular approach, right. First of all, this is very important thing. Second benefit of this, right, for example, making changes, I don't need to affect many files, right, or a single file with right many other components, right, while editing single file. So I will, if I have to change something related to IAM, I have a right YAML related to right IAM right dot YAML, so I will be making changes there, right, which would be inside the task folder. So in that way I'm breaking down right and creating a folder structure to understand that. So now I will first give you right how this manage projects right right are created, right, how which is the command right to create this right structure project by default, rather than you creating one folder one by one, right, and structuring them. So let me open this, and there is something called Ansible Galaxy. Have you heard about Ansible Galaxy, guys? What do you think would be Ansible Galaxy? इट इज लाइक अ रजिस्ट्री, लाइक डॉकर का अपना रजिस्ट्री होता है ना, गिट हब अपना कोड रिपोजिटरी है, राइट, इसी तरह Ansible Galaxy is right, you can say kind of a project repository, right, through which Ansible right has automated right many stuff. So if I do Ansible Galaxy site,
I can see right already right reusable projects are already there. So rather than writing my own right playbook, I can write use as per my use case right and use which is already pre-written. For example, if I want to do something related to web, I will go to this right web section and I can write search for right what I want. For example, you want write anything related to Nginx implementation, right, or Apache Tomcat installation, which is related to web, right? So you can search for, say, for example, Nginx. Now you can see right there are many right engines project automation which is already there. So how you will choose the one, right? So basically people will choose with maximum downloads and also the rating, right, in terms of bugs and everything, which is right very less, right, and which is most demanded, right, in terms of download. As per that you can choose, right? So there are scores also given, right? As per the scores also you can right use. So this the build state is what better is passing, right? Is something right which right now nothing has been tested, but it is right downloaded most of the time engine score. So you can choose right as per those right numbers, right, which right is better. So I can see right this has a very good score 4.6, right? So I can right basically try to look right into this and right try to directly install. तो हम कर सकते हैं right engines पे गए तो यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएंगे कि Ansible right Galaxy install whatever this command if you run in your machine, right, where Ansible master is, it will definitely bring this project, right, and the structure which is already there. So you don't need to do the hard work, right, of right creating everything, right, start. Similarly, if you go right for other projects also for networking, right, there are many other things. So those who are very working related to networking can go to this networking section and right can right find a solution related to right what you are using, right? For example, some DNS solutioning, right, which is already right coded Cisco related, right? So as per your organization you're working and you want to set up something, you don't need to right basically start from scratch. Already the base is created, over that you can right build. So this is what the benefit of Ansible Galaxy. Okay. And right therefore it is so popular also in terms of automation. You can bring something here. मैं वो जो कमांड आता है राइट वो मैं रन करूंगा तो मेरा आ जाएगा. बट फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू फॉर योर ऑन प्रोजेक्ट, मतलब आपको ये जो ओपन सोर्स और राइट ओपन प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं करके आपको खुद का बनाना है. तो हाउ यू विल स्टार्ट राइट एट योर कंपनी, राइट, which is related to custom to your organization. So there is a command, right? For example, I will come out of this, I will go to home directory, right? I will run a command like Ansible Galaxy, okay, in it. So I want to start working on project of my organization, say my org project. Say this is the name, right? You can keep as for the tool that you are using for which you are doing automation, right? Or product for which you are doing. Yeah. So if I run this Ansible Galaxy init my project, so it says right role my org project was created successfully. So locally it has created the project. If I do ls minus ltr, you can see my org project is created. I hope I have tree command. No, I do not have tree command. So I will do sudo apt get install tree. So for tree, I'm just using for showing you right the folder structure what is created in my org project. So tree my org project. Now you can see right these are the default folders which are created, right, and each folder have their own purpose, right, or their demand, right, or need, right. For example, all my actions, actual actions will go where in the task folder, which I told you, right. For example, if I'm using some template and I want those template to be right used or copied somewhere in right some configuration file. So all the templates right related to some configuration, right, I might keep here right in template folder. Say I want to copy my configuration files which I want to write copy to remote servers. I can keep them in my files folder, right. Handlers we know, right, handlers क्या कर रहा है. ऑब्वियसली रीस्टार्ट सर्विस जब भी होगा, जब मेरे टास्क में ये जो टास्क है इसमें अगर मैंने डिफाइन किया है मेरे मेन डॉट YAML या मेरे YAML जो मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है, राइट, उसमें अगर मैंने डिफाइन किया हुआ है जहां पे भी मैंने नोटिफाई वर्ड यूज किया तो कहाँ किस फोल्डर को लुक आउट करेगा, हैंडलर, और हैंडलर में लुक करेगा वो नेम को, वो नेम का एक्शन है तो उसको कर देगा. इट इज सेम थिंग, सेम प्लेबुक that you have written, right, for example web server installation has been broken down right into right smaller YAMLs chunked into and put into right each YAML's main.yaml. तो अब जब मैं Ansible playbook रन करूंगा,
राइट? तो सबसे पहले कौन सा फोल्डर के तरफ जाएगा वो? एनीवन? डिफॉल्ट। नो, इट विल गो टू मेटा. सो मेटा क्या होगा? मेटा इज अबाउट योर प्रोजेक्ट. तो अबाउट योर प्रोजेक्ट में क्यों जाएगा? अबाउट योर प्रोजेक्ट में तो हम जनरली लिखेंगे ना कौन ऑथर है, किस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, क्या करता है. बट एक्चुअली इन मेटा वी कैन ऑल्सो डिफाइन डिपेंडेंसीज. मतलब मेरे इसको रन करने के लिए अगर कोई डिपेंडेंट राइट मॉड्यूल्स हैं जो रन होने चाहिए, राइट, वो मैं कहाँ पे डिफाइन करूंगा? मेटा में. तो उसको लेकर आएगा. तो सबसे पहला मेटा का मेन डॉट YAML कॉल होगा, right, in terms of bringing the dependency, because dependencies are defined in meta with the डिटेल्स ऑफ ऑथर. जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो स्क्रिप्ट में हम सबसे पहले लिखते हैं ना ये स्क्रिप्ट किस लिए है और कौन इसका ऑथर है, क्या करने वाला, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन मेटा में डालते हैं. प्लस हम डिपेंडेंसीज और प्लेटफॉर्म डिटेल्स जो प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है वो हम मेटा में डालते हैं. ठीक है, मेटा के मेन डॉट YAML में. उसके बाद मेटा के बाद जो सबसे पहला अगर देखा जाए, राइट, इन अ नेचुरल वे रनिंग प्लेबुक, द टास्क इज द फोल्डर विच विल बी कॉल्ड वेरी फर्स्ट, राइट. तो टास्क के अंदर क्या होगा? मेरा एक्चुअल राइट एक्शंस होंगे, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे एक्शंस को छोटे छोटे पॉइंट में ब्रेक कर सकता हूँ. अभी कल का एग्जांपल अगर हमने प्लेबुक का देखा तो हमने क्या क्या किया था? इंस्टॉल, कॉन्फ़िगरेशन एंड सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन किया था, राइट. तो हर एक्शन का मैं एक YAML बना के टास्क फोल्डर के अंदर बना सकता हूँ. जैसे इंस्टॉल डॉट YAML, configure डॉट YAML, सर्विस डॉट YAML. और उनको मैं कहाँ पे कॉल करूंगा? मेन डॉट YAML में क्या करूंगा? इंपोर्ट करूंगा. तो मैं सीक्वेंस में उनको कॉल कर सकता हूँ ब्रेक डाउन करके. वी विल सी, राइट, प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट, इन विच आई विल शो यू द सेम थिंग विच आई एम सेइंग. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट? तो टेस्ट क्या है? आपका एक टेस्टेबल फोल्डर बना दिया है जहां पे आप टेस्ट इन्वेंटरी रख सकते हो और आपका टेस्ट YAML, तो आप डायरेक्टली वहां पे उसको टेस्ट करने के लिए रन करते हो. बट रिमेंबर, is not that required because I have features like tag and other thing, right, conditions which I can put right in my right task YAMLs, where I can define my test right related use cases, or also right using tags which right is required for testing, which are not right a test one. So I can do right using a normal way also without using this right test one. You got my point which I mean to say? It's your choice whether you want to define your right test code. It is something like right अगर हमने Maven में देखा तो Maven में हम क्या होता है, एक टेस्ट फोल्डर बनाते हैं जहाँ पे मेरा टेस्ट कोड रहता है और टेस्ट कोड के लिए उसका जो भी राइट कंपाइलेशन होता है और उससे जो रिपोर्ट जनरेट होता है यूनिट टेस्टिंग का. In similar way they have thought of now it is choice whether we want to use it or not. Generally I have seen right in the projects where right images the audio images right in a specific project where Ansible was very vast and I had been part of that, we have seen that we discarded this practice right of using tests, rather than we defined using tags aggregated. It was easy to maintain, right, and it was right easy to right run the test cases also, right, properly. Now task might have what need of variables. तो अभी जो हमने जैसे वैर अभी डिफाइन किया था ना डेव YAML में, तो वैर्स कहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं? मेन डॉट YAML के अंदर डिफाइन कर रहे हैं और कोई भी नाम दे सकते हैं और मेन डॉट YAML में इसको सोर्स कर रहे हैं. अगर मान लो जो मैं टास्क में वेरिएबल यूज कर रहा अगर वो वैर्स में नहीं मिला, तो कहाँ पे जाके ढूंढेगा? डिफॉल्ट्स में जाके ढूंढेगा. मतलब डिफॉल्ट इज द लास्ट पोजीशन वेयर योर राइट वेरिएबल्स वुड बी डिफाइंड, जो आपके डिफॉल्ट वैल्यूज होंगे राइट कोई वेरिएबल के, वो वहां से पिकअप करेगा अगर वैर्स में उसको नहीं मिलता है तो. इज एवरीवन क्लियर विद राइट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच फोल्डर? हेलो दीपक, इसका सीक्वेंस क्या होगा? मतलब सबसे पहले आपने जैसे बोला मेटा, ठीक है, मेटा, टास्क्स, टास्क विल नीड व्हाट? मे बी हैंडलर, वेरिएबल्स, तो इट विल वेरिएबल्स. वेरिएबल्स यूज करेगा. अगर टास्क नीड्स राइट हैंडलर नोटिफाई कीवर्ड है तो हैंडलर्स के पास जाएगा. अगर टास्क ने कॉपी मॉड्यूल यूज किया और वो फाइल्स के अंदर में जाके कोई कॉपी करना चाहता तो फाइल्स पे जाएगा. सो टास्क विल बी इंटरेक्टिंग विथ राइट ईच ऑफ अदर फोल्डर्स बेसिकली, राइट. टास्क विल बी कॉलिंग देम, राइट. ओके. Okay, यस. is it clear to everyone, guys? If not, please ask queries, questions, so that you can write. If you have certain confusion somewhere, right, you can clarify it. Though we are going to do lab, right, which might right clear most of the thoughts and right doubts. Okay. If not, let's use right role, and through that role, let's deploy an HTTPD right
server in a remote machine, right, using roles. So that same project is present in my this Ansible projects. You can use it in Ansible project. There is something called roles, and in this I have created a roles called Apache, and I will go through the I will walk you through what Apache contains, and then we will run this role through some main YAML file, right? There would a main YAML file which will be calling the role. I will show you, but let's first see the roles. जो भी मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, राइट? मैं रोल्स अपाचे के अंदर गया तो क्या क्या है? वेयर, टेस्ट, टास्क, मेटा, हैंडलर, फाइल, डिफॉल्ट. लेट्स गो टू मेटा फोल्डर फर्स्ट, राइट? एंड मेटा का मेन डॉट YAML देखते हैं. क्या बताया हुआ है? किस तरीके से क्या चीजें होती है, राइट? गैलेक्सी इन्फो ऑथर कौन, जिसने ये फोल्डर क्रिएट किया होगा, राइट? मैंने मान लो रन किया होगा, है ना, एंसिबल गैलेक्सी, राइट, इनएट अपाचे, तो अपाचे नाम का बन गया, है ना? अगर मैं बोलूंगा एंसिबल गैलेक्सी इनएट एचटीटीपीडी, तो एचटीटीपीडी नाम का बनता. तो आई विल शो यू कि मैंने अपाचे नाम का बना के क्या इनसे इंस्टॉल करा रहा हूँ, एचटीटीपीडी सर्वर कर रहा हूँ. ऑब्वियसली इट इज अबाउट टास्क में जो डालूंगा वो करेगा. अभी गैलेक्सी इन्फो ऑथर क्या है, मैंने डाला योर नेम, मतलब आप कोई भी नाम डाल सकते हो, आपका नाम जो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है या उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? Those are the author, right? Description about this project, right? And also I'm defining, what is the minimal Ansible version, right? Compatibility, right? And the platform that I am using. So whatever the platform, right, in which it will work, Fedora or Linux के variants, right? Well, I can define, right, which all version it's and I can put a tag also. If I'm putting into Galaxy, right, people can search whether it is a web project or not, whether it's a networking project or not. So I can provide a tag to my project also. And dependency, right, basically it lists your role dependencies here, one per line. Be sure to remove this, right? And you have to give multiple dependencies. Like if I want for my project to work, for there is a dependency of MySQL, so I will call dependency as a MySQL role. So it will do what? It will fetch that role if it is there, and it will try to first run that role, and then it will run your main project. Have you got my point here, guys? And therefore this is the first executor, right, in a way. Guys, got it? Questions, please, if there. Go ahead. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ. इतना साइलेंस, राइट, इज समटाइम्स स्कैरी फॉर मी. ओके, गुड है. मतलब यू ब्रॉट अ कंटेक्स्ट, राइट? समझो अगर कोई पूछेगा कभी रोल्स में, राइट, कि मेटा क्या है, तो यू कैन डिफाइन ऑल दिस, राइट? टैग्स, डिपेंडेंसीज, प्लेटफॉर्म, राइट, and author, right? These are the important things to talk about, right, whenever they will talk about role meta. Okay, now in Apache, again, right, I will go to tasks. Now in task, see, I have a main.yml, right? This is the main caller, right? अभी देखो main.yml में मैंने क्या किया है, सीक्वेंस में कॉल किया हुआ है किसको? install.yml, configure.yml और service.yml. तो मतलब import task क्या कर रहा है, एक एक करके इनको रन कर रहा है. और मैंने क्या क्या इनको ब्रेक किया इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग, राइट, माय एक्शंस. अभी मेरे को इंस्टॉल रिलेटेड कुछ भी चेंज करना होगा तो मैं install.yml में जाके रन कर चेंज करूंगा. तो मैंने install.yml में कुछ नहीं रखा है. क्या किया है? नेम, इंस्टॉल http पैकेज और yum यूज किया है और httpd डाल दिया, है ना? httpd is a web server for, right, Red Hat variants of, right, machine. True? Okay. So ये मैंने यहाँ डाल दिया. फिर मैंने कॉन्फ़िगर किया. देखो कॉन्फ़िगर में मैंने क्या किया है, कॉन्फ़िगर में मैंने एक फोल्डर यूज किया है, फाइल्स फोल्डर है हमारे उसमें. तो मैं क्या किया, फाइल्स में ऑलरेडी मैंने ना httpd.conf वेल कॉन्फ़िगर्ड http.conf रखा है और मेरा index.html फाइल रखा है. इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ रिमोट मशीन के where www.html और etc httpd में. जब मैं पहले इंस्टॉल करूंगा रिमोट मशीन में, तो ये पाथ बनेंगे, राइट, etc http.conf, राइट. इसके अंदर जाके http.conf डाल रहा हूँ मेरा कॉन्फ़िगर्ड, और सिमिलरली मेरा जो index.html में वो प्लेस कर रहा हूँ. तो मतलब मैं अपने फाइल्स जो है, राइट, वेल कॉन्फ़िगर्ड फाइल्स फोल्डर में सेलेक्ट करके वहां पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ. कोई स्क्रिप्ट है, मैं ऑलरेडी स्क्रिप्ट अपने एनसिबल मास्टर पे फाइल्स फोल्डर पे मेंटेन करता हूँ, उसको वहां पे रिमोट पे पहले डिप्लॉय किया एक पाथ पे, फिर उसके बाद उसको रन किया मेरे, राइट, एनसिबल मॉड्यूल कमांड से. अगर इफ आई वांट टू डू दैट आल्सो आई कैन डू दैट. यू गॉट माय पॉइंट, गाइस? अभी अभी यहाँ पे देखो मैंने नोटिफाई कीवर्ड भी यूज किया. तो नोटिफाई क्या है, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूँ तो मुझे रीस्टार्ट करना है. बट ये नोटिफाई किसको कॉल करेगा? ये नोटिफाई किस फोल्डर के पास जाएगा? ये जाएगा हैंडलर के पास, है ना? हैंडलर्स में अगर जाके देखेंगे तो main.yml में मैंने रीस्टार्ट अपाचे करके
डाला हुआ, राइट? नहीं, रिस्टार्ट अपाचे, और ये क्या कर रहा है, HTTPD को रिस्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है? Now let's come back to Apache and then let's see, right, service.yaml क्या कर रहा है. service.yaml is same like handlers जो कर रहा है, वही मैंने इसके लिए एक service.yaml भी लिख दिया है. तो service.yaml क्या कर रहा है, सर्विस स्टार्ट कर रहा है. यहाँ पे मैंने वही सेम स्टार्ट, राइट? अगर मुझे खुद एक्सप्लिसिटली एज एन एक्शन, राइट, सर्विस स्टार्ट करना है तो मैं इसको भी सीक्वेंस में कॉल कर रहा हूँ. ऑब्वियसली हैंडलर तो कर रहा है, बट मैंने खुद से भी कर दिया, राइट, service.yaml यहाँ पे भी डाल के. यू गॉट माई पॉइंट? दो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, अगर मैं राइट कॉन्फ़िगरेशन चेंज के बाद नोटिफाई कर ही रहा हूँ तो service.yaml की जरूरत नहीं है, बट जस्ट एन एग्जांपल, राइट? अगर इफ आई वांट, राइट, टू ऑर्केस्ट्रेट फ्रॉम माय एक्शंस, सो आई कैन डू दैट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? Yes. दिस पार्ट ब्रेकअप. तो वो मेटा वाला फिर से समझाओ नहीं तो. सो मेटा में आप देते हो, जैसे कि अगर मैं कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, राइट विशाल, तो हम स्क्रिप्ट को ऐसा लिखते हैं कि आगे वाला कभी कोई आके, कोई दूसरा पर्सन आके अगर मेरा स्क्रिप्ट को यूज करे तो उसको सब कुछ पता होना चाहिए, राइट? है ना? कि ये स्क्रिप्ट किस लिए है, ये ऑटोमेशन जो लिखा है स्क्रिप्ट ये किस लिए है. तो मेटा में हम वो चीजें बताते हैं कि इसका ऑनर कौन है, कौन इसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई द पर्सन एंड टॉक अबाउट दैट, ठीक है. दूसरा, इस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म पे रन होता है, ठीक है, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, राइट, और ये क्या डिपेंडेंसी है इस प्रोजेक्ट को रन होने के लिए. तो सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रहेगा, मेटा में रहेगा. नाउ क्लियर विशाल व्हाट आई मीन टू से? It means all information about project, right? हाँ, अभी इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हो. मैंने आपको एक जेसन फाइल दिया या एक डाटा दिया, राइट, एक फाइल डाटा स्ट्रक्चर में एक फाइल दिया, मे बी जेसन एक्सएमएल, ठीक है. बट अगर आपने, मैंने उसको मेटा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि ये की किस लिए है और ये जो टाइप है, जो डाटा का टाइप है वो क्या है, तो आप समझ नहीं पाओगे ना उस डाटा को. तो यू नीड, राइट, सम मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा, है ना? ये राइट कि क्या कंटेन करता है, किस तरह का डाटा क्यों है, राइट? तो एक हम कहीं पे मेटा इन्फॉर्मेशन रखते हैं डाटा का, तो मेटा इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि ओके ये डाटा ये है तो मैं डाटा को यूज कर पाऊंगा. इज इट क्लियर नाउ? In that context, right, project specific, we have a meta information about the project. Okay. Yeah. Okay. Now, see, we are not using vars, right? कुछ नहीं है vars के अंदर में, right? But I want to show you, right? It is very useful, right? So कैसे? Let me go to my one of my other project, which, right, every one of you have to, right, do. अगर आपने इसको seriously किया तो I am telling you कि Ansible पे फिर आपको, मतलब कोई इजीली बोल नहीं सकता कि आपने बहुत रेट इतना ही नॉलेज, आपको अच्छा खासा नॉलेज है, ये समझेंगे और आपको आ भी जाएगा अगर आप उस प्रोजेक्ट को, राइट, खुद से अच्छे से करोगे. So there is a one project, right, which I have created, which is called Jenkins, Ansible Jenkins pipeline project. ठीक है, ये रोल बेस्ड प्रोजेक्ट ही है, रोल ही है. ये जो जेंकिंस है वो क्या है, एक रोल है, ठीक है. इस प्रोजेक्ट का जो मेन फंडामेंटल वो क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिस भी इन्वेंट्री, जिस मशीन पे आप राइट इंस्टॉल करना चाह रहे हो या एक्शन करना चाह रहे हो, रोल रन करना चाह रहे हो, वो उस मशीन पे पहले जाके समझता है कि वो रेड हैट है, यूबुंटू है, कौन सा मशीन है, एज पर द राइट ओएस फैमिली फ्रॉम गैदर फैक्ट्स, एंड देन इट ट्राई टू इंस्टॉल द प्रीरिक्विजिट लाइक जावा, right, to that machine, and then Jenkins, because Jenkins need, right, Jenkins is a prerequisite of Java, तो वो आइडेंटिफाई करता है और वो चीजें वो क्या करता है, इंस्टॉल करता है जाके. सो आपका Jenkins इंस्टॉल करता है. आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ Jenkins वो वहां पे क्या करता है, एक जॉब भी क्रिएट करता है, ठीक है. सो सब ऑटोमेटेड है, जॉब वॉब क्रिएट करना. तो ऑब्वियसली आप जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट में अगर आप जाओगे तो सबसे पहला आप होता है जो इसको रन करेगा, राइट, इस रोल को रन करेगा. तो देयर इज वुड बी अ राइट मेन प्लेबुक, राइट, विच विल कॉल इट. सो ये playbook.yaml मान लो है. तो इसमें कुछ नहीं है, एक इन्वेंटरी फाइल है जिसमें Jenkins सर्वर लिनक्स स्टैटिक आईपी डिटेल्स हैं, राइट. ये sudo obviously will change to become for your right lab purpose, and roles is Jenkins, मतलब ये रोल Jenkins को कॉल कर रहा है. तो इसके बाद से किल स्टार्ट क्या हो जाता है, Jenkins will come in picture. तो अब Jenkins में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम टास्क में जाएंगे. ऑब्वियसली मेटा तो है ही, अगर डिपेंडेंसी तो रन करेगा, बट सबसे पहला ये, तो यहाँ पे भी किसको जाएंगे, टास्क में जाकर main.yaml को देखेंगे. अब देखो main.yaml में इसने सबसे पहले क्या किया है, इंक्लूड ओएस स्पेसिफिक वेरिएबल. अब ये Ansible OS फैमिली, राइट, ये कहाँ से मिल रहा है, Ansible OS फैमिली, इट इज अ वेरी डिफॉल्ट राइट वेरिएबल गैदर फैक्ट्स लेकर आता है.
मतलब आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एनसिबल ओएस फैमिली कौन देता है? गैदर फैक्ट्स। तो गैदर फैक्ट्स पता कर लेता है कि रेड हैट का है या डेबियन। तो इस हिसाब से उसने क्या किया, इंक्लूड वेयर्स बोला है कि ये वाले जो रेड हैट के रिलेटेड जो वेरिएबल्स है, अगर मान लो मेरा मशीन रिमोट रेड हैट है तो रेड हैट YAML के वेरिएबल्स को इंक्लूड करेगा। नाउ हियर आई विल गो टू राइट वेयर्स, राइट यहाँ पे देखो ओएस फैमिली रिलेटेड YAML यहाँ पे। तो अब ये रेड हैट YAML से रिलेटेड सारे कॉन्फ़िगरेशन डाले कि रेपो यूआरएल कहाँ पे है जहाँ पे जेंकिंस मिलेगा, राइट, की क्या है, राइट, पैकेज यूआरएल क्या है, राइट, जेंकिंस इनिट फाइल कहाँ बनेगी, राइट, जेंकिंस पोर्ट क्या है, ये सब जो चीजें हैं, राइट, ये सब डाला हुआ है। ऑब्वियसली जेंकिंस पोर्ट भी क्या होगा, कहीं ना कहीं एक वेरिएबल डिफाइन होगा जिसमें राइट पोर्ट डिफाइन होगा कहाँ पे रन होगा। तो ये कहाँ पे डिफाइन होगा, अगर मैं यहाँ पे नहीं मिला तो ऑब्वियसली मैं कहाँ पे लैंड अप करूंगा, ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं तो हो सकता है ये डिफॉल्ट्स में हो। अगर मैं डिफॉल्ट्स में जाऊं तो यहाँ पे आपको देखो जेंकिंस पोर्ट, राइट, जेंकिंस एचटीटीपी पोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड है। और ये कौन कंज्यूम कर रहा है, ये सब कौन कंज्यूम कर रहा है, टास्क में। अगर हम जेंकिंस में जाएंगे, अगेन टास्क में जाएंगे, ठीक है, और अभी मेन डॉट एमएल में जाएंगे तो मेन डॉट एमएल में डिफाइन जेंकिंस रेपो यूआरएल, देखो सेट फैक्ट जेंकिंस रेपो यूआरएल, जेंकिंस ये वाला अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो हमारे वेरिएबल में डिफाइन था वो उसने उठा लिया, ठीक है। और एक कंडीशन दिया, व्हेन जेंकिंस रेपो यूआरएल इज नॉट डिफाइंड। अगर ऑलरेडी डिफाइंड है तो मुझे रन करने की जरूरत नहीं है, अगर ये डिफाइंड नहीं है तो ही मैं डिफाइन करूंगा, नहीं तो मतलब जो मेरा ऑलरेडी सेट है वो यूज करूंगा, राइट। तो ऑब्वियसली स्टेट मेंटेन कर रहा है, राइट, क्या पता आपने पहले रन किया तो ऑलरेडी वो डिफाइंड है वहां पे, है ना। फिर की यूआरएल उठा के लेकर आया जेंकिंस पैकेज, उसके बाद देखो आपका मेन ये कॉल किया एज पर राइट योर एनसिबल ओएस फैमिली। अगर रेड हैट है तो कौन सा करना है, सेटअप रेड हैट YAML। नाउ दिस इज द YAML राइट व्हिच विल इंस्टॉल योर जेंकिंस। अगर हम चाहें टास्क में तो यहाँ पे आपको सेटअप रेड हैट डॉट, तो यहाँ पे देखो इसने क्या, इंश्योर डिपेंडेंसीज आर इंस्टॉल्ड, राइट, तो इसने पैकेज नेम मॉड्यूल कर्ल ये सब चीजें इंस्टॉल की, ठीक है। उसके बाद जेंकिंस रेपो इज इंस्टॉल्ड, तो जेंकिंस रेपो यूआरएल से क्या किया, डेस्टिनेशन यम्स रेपो से उठा के लेकर आया और उसके बाद राइट आरपीएम की से मान लो उसको इंस्टॉल कर दिया, राइट, जो भी है। एंड देन इट इज डूइंग वट एवर, राइट, स्टार्ट जो भी सर्विस है इंस्टॉल हुआ कि नहीं, ये सारे एक्शन करके आपका जेंकिंस वो अप लेके आ रहा है। तो यू विल सी राइट जेंकिंस वुड बी ऑटोमेटेड वे, राइट, जेंकिंस इज इंस्टॉल्ड इन योर राइट system, right, using Jenkins. So my intention is to say you right, say this thing like this particular repo is a broken repo. You have to correct it. So पहला आप रन करोगे command ansible playbook -i whatever inventory file which is there right in the repo and playbook.yaml, तो आपको कुछ एरर आएगा, है ना कहीं कोई एक्शन पे एरर आएगा ना, आपको डिबग करना है कि वो एरर किसके कारण आया है, क्या कोई वेरिएबल मिसिंग है या कोई राइट रेपो का यूआरएल सही नहीं है, तो आप वो ढूंढ के उसको करेक्ट करोगे। एंड यू हैव टू ब्रिंग दिस राइट एट दैट स्टेज वेयर इट इज एबल टू राइट ब्रिंग अप योर जेंकिंस, able to log in and create right a job in that, right, so ये सारी चीजें उसमें ऑटोमेटेड है। so everyone got the point right which I mean to say about this lab। तो ये आपको करना है। अभी मैं एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा जो हम अपाचे का वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन ऑन दिस फर्स्ट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस राइट जेंकिंस पाइपलाइन, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। आप जब करोगे आपको बहुत सारी चीजें राइट हैंड्स ऑन होगा, राइट, एंड यू विल बी राइट मच कॉन्फिडेंट राइट इन एंसिबल। ओके दीपक इसमें सेट फैक्ट कुछ तो यूज किया था कीवर्ड आई थिंक। गैदर फैक्ट से उठा के अगर मैं कुछ डालूंगा तो सेट फैक्ट्स करूंगा ना। गैदर फैक्ट्स क्या करेगा, आपको वेरिएबल आके देगा, ओके राइट। सेट फैक्ट क्या करेगा, एक वेरिएबल में वैल्यू सेट करेगा, दैट्स इट। मतलब आपका क्या कर रहा है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करने वाले हो वहां पे एक वेरिएबल बना रहा है जेंकिंस रेपो यूआरएल, और आपने जो जेंकिंस रेपो यूआरएल डाला हुआ है आपके वेरिएबल फाइल में उसकी वैल्यू उस वेरिएबल में डाल दे रहा है। दैट इज व्हाट द सेट फैक्ट इज। ओके और कंडीशन भी सेट है हाँ कंडीशन भी सेट है, अगर डिफाइन नहीं है तो ही डालो, नहीं तो डालने की जरूरत नहीं है। ओके सो इट्स काइंड गैदरिंग इफेक्ट या करेक्ट। सो गैदर फैक्ट्स ने तो आपने डाटा ला दिया, अब गैदर फैक्ट्स के अंदर मैं सेट कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ कंटेंट कि मैं यूज कर सकूं उसको, राइट, व्हाइल डूइंग सर्टेन एग्जीक्यूशन, ठीक है। ओके जैसे एनसिबल ओएस फैमिली आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। एनसिबल ओएस फैमिली कौन लेकर आ रहा है, गैदर फैक्ट्स लेकर आ रहा है, ऑलरेडी ये सेट फैक्ट्स हैं एनसिबल ओएस फैमिली, आपको मिल जा रहा है, ठीक है। so it's kind of defining a variable something yeah यस यू कैन से दैट। okay
do definitely right, take clone this repo and right, exercise it. Don't think about right, it will be difficult. It should be difficult for you initially, but when you will start right spending time into it, right, maybe right you will come out right with much confident right in Ansible, right, in a real world, right, what is used, right, you will see that right here. Okay, definitely do this. Now I will come to right my Ansible project, which is right an example and which is right important right before doing Ansible Jenkins right pipeline project. Do this first. पहले इसको करना है, उसके बाद उस पे जाके right land up होना है. Okay, now सो अभी क्या करना है मुझे, इस रिमोट मशीन पे राइट अपाचे इंस्टॉल करना है. हमने देख लिया हमारा अपाचे में क्या क्या डिफाइन है, httpd कौन क्या डिफाइन है. तो अभी अगर आप मेरे मशीन पे देखोगे तो cd Ansible प्रोजेक्ट्स, ये रेपो मैंने क्लोन किया हुआ है राइट. इसी में हमारा प्रोविजनिंग का लैब था, इसमें रोल्स करके. नाउ ये जो रोल्स है, रोल्स के अंदर हमारा क्या है, अपाचे रोल है राइट. अभी मैं कहीं से तो उसको कॉल करूंगा ना रोल को, तो उसके लिए मैंने एक प्लेबुक लिखा है रन सेटअप डॉट yml. कैट करके देखो रन सेटअप yml को क्या है इसमें राइट. मैंने बोला है होस्ट क्या है, वेब सर्वर्स बिकम यस, मतलब एज अ रूट यूजर, और किस रोल्स से करना है डिप्लॉयमेंट या जो भी ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस रोल्स अपाचे. अपाचे के अंदर जो टास्क है उसको रन करना है. तो मैंने ये रोल्स कर दिया. इस रोल्स फोल्डर में मेरे जितने रोल होगा मैं उन सब रोल्स को वन बाय वन कॉल कर सकता हूँ राइट इन सीक्वेंस एज पर माय रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन. अनदर थिंग राइट, आई नीड एन इन्वेंटरी फाइल. ऑब्वियसली अगर मैं होस्ट वेब से कर रहा हूँ, मेरे को एक इन्वेंटरी फाइल चाहिए. उस इन्वेंटरी फाइल में मेरा रिमोट मशीन जहाँ पे मेरे को इंस्टॉल करना है उसका डिटेल होना चाहिए. तो अभी मैं httpd कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा रिमोट मशीन क्या होना चाहिए, रेड हैट. तो मैं एक इन्वेंटरी फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, vi राइट env वेब करके मैं नाम दे देता हूँ env वेब. इसके अंदर ऑब्वियसली सेक्शन का नाम क्या होगा मेरा, वेब सर्वर्स. ठीक है, यही हमने रन सेटअप डॉट एमएल में डाला है. और यहाँ पे मैं डाल दूंगा मेरा जो भी रिमोट मशीन है राइट. मैंने एक राइट रेड हैट मशीन रखा था राइट. अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, बाकी तो टर्मिनेट हो गए होंगे. हाँ, एक वेब रनिंग है, तो मैं ये वाला जो मशीन है नया मशीन है राइट, जो हमने प्रोविजनिंग से किया है उसी को यूज कर लेते हैं. इसका ये आईपी उठा लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं. सिंस मेरा एनसिबल मास्टर यूबुंटू मशीन है और रिमोट मशीन राइट रेड हैट है, तो आई विल यूज विच यूजर एनसिबल अंडरस्कोर यूजर राइट इन्वेंटरी इक्वल टू EC2 यूजर से उस पर लॉग इन होना चाहिए. करेक्ट, ये भी मैंने डिफाइन कर दिया. अभी ऑब्वियसली मेरे को उस मशीन पे लॉग इन करके राइट की भी डालना है पासवर्डलेस एक्शन के लिए राइट. तो मैं वो भी कर देता हूँ. cd downloads control r ssh okay here my bad. सबसे पहले तो एंड ये हटा दो, EC2 dash user @ पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, और लॉगिन करते हैं. यहाँ पे लॉगिन हो गए. यहाँ पे मुझे यहाँ का SSH की उठाना है, एंसिबल मास्टर का कैट पब की कैट टिल्डा डॉट SSH idrsa डॉट pub. and vi dot ssh authorize keys insert mode नीचे के लाइन पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. मेरा यहाँ पे कनेक्टिविटी सेट हो गया. ठीक है, इस मशीन से यहाँ पे मेरा httpd इंस्टॉल करने वाला है, तो आई शुड इंश्योर कि यहाँ पे मेरा कुछ है नहीं राइट. ग्रैब httpd करके देखा, नहीं कुछ नहीं चल रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू आवर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन्वेंटरी फाइल बना दी है. ठीक है, env वेब करके. अभी हम एक बार रोल्स में जाते हैं और ठीक है, इसके अंदर cd अपाचे में हमने index.html कहाँ पे रखा है अपना, फाइल्स पे रखा हुआ है राइट.
cd फाइल्स में जाते हैं तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है राइट http.conf का वो यहाँ से कॉपी होगा। अभी हम लोग index.html को देखते हैं क्या है। ये मतलब बाय डिफॉल्ट जैसा नॉर्मल index.html होता है वैसा होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको टर्म मतलब इसके कंटेंट हटा के ना एक बेसिक HTML फाइल डाल देता हूँ, ठीक है। तो सो दैट हमें जो हमने डाला वो दिखे राइट जब लॉन्च होगा। तो मैं इसको पहले तो ट्रंकेट कर दिया, पूरा का पूरा उड़ा दिया, ठीक है। इसके अंदर का कंटेंट vi किया index.html को और यहाँ पे एक HTML डाल दिया, HTML टैग, ठीक है। yyp insert what happened, okay here मैं यहीं पे हूँ, ये वाला टैग, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉडी टैग डालूंगा, ठीक है। और हेडर टैग डाल देते हैं h1 और यहाँ लिख देते हैं रेट यूजिंग Ansible roles, ठीक है। हमने इतना डाला अभी, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो index.html हमारा बन गया, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग इसको कहते हैं डिप्लॉय करते हैं, है ना, वहाँ पे। तो अभी रोल्स फोल्डर के अंदर अपाचे है, इसके पीछे में हमारा प्लेबुक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल Ansible playbook -i inventory, that is env.web, and then we have what our run setup.yaml, right। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या करने वाला है, कनेक्शन तो बराबर है राइट, कनेक्शन हो रहा है। और राइट दिस आर द चेंजेस, अपाचे स्टार्ट एंड इनेबल, बिकॉज ऑब्वियसली डिप्लॉय किया नहीं है, चेक है, तो ऑब्वियसली स्टार्ट तो फेल दिखाएगा, बाकी मतलब इट्स ऑल गुड राइट। इट इज डूइंग वट एवर, कॉपी करेगा, ये सब चीजें वो करेगा। ड्राई रन में उसने बताया, ठीक है। सो वी आर फाइन, सो वी कैन डू द एक्चुअल रन। तो अभी ड्राई रन किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ दिखना नहीं चाहिए HTTPD, क्योंकि इंस्टॉल हुआ ही नहीं है ना। अभी हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं चेक हटा के, ठीक है। रन किया, ठीक है। स्टार्ट हुआ, इनेबल सर्विस भी चल गया इस बार, ठीक है। रिस्टार्ट अपाचे मतलब चल गया सब कुछ, है ना। अभी यहाँ पे जाके देखते हैं कि सर्विस को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे भी HTTPD, देखो HTTPD सर्विस आ गया, ठीक है। हमने अपने वेब में ऑलरेडी पोर्ट 80 इनेबल किया हुआ था, एंड राइट HTTPD बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे चलता है, ठीक है। तो हम जाते हैं हमारे वेब मशीन का ये IP उठाते हैं, इसको ब्राउज कर लेते हैं। तो अभी ये यूजिंग Ansible रूल्स हमारा आ गया राइट। अभी हम वापस से रोलिंग राइट अपडेट करते हैं। सो राइट vi roles apache फाइल्स, इसमें index.html को ओपन करते हैं और यहाँ पे एक बॉडी टैग डाल देते हैं, ठीक है। सो यूजिंग Ansible roles, ठीक है। It's fine right, anything wrong? I don't see. Yeah, it's fine. Yeah, let's see right what changes and what remains green, right? So let's HTTPD उसने वापस इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ index.html चेंज हुआ, HTTP सर्विस उसने चेंज हुआ, वापस से ओवरराइट किया, राइट। तो ऑब्वियसली ओवरराइट एक्शन है, कॉपी एक्शन है, तो चेंज आएगा ही आएगा हमेशा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली रीस्टार्ट वुड बी आल्सो चेंज एक्शन बिकॉज़ वी आर रीस्टार्टिंग अ सर्विस। नाउ हियर try to refresh it, and we can see right this change is also coming in. So using Ansible we are able to right change, deploy right using the roles. So basically at the end we are calling that role, and role is calling that task, and task it is doing installation, configuration, right, and service orchestration, right, using roles. Is this clear to everyone? Yes. इसको करना है, ठीक है। So I would like everyone to right perform this
right, provisioning का और ये सब आप करो, and then right jump to that Jenkins pipeline का project. Okay, I'm done with today's session. In the next right lecture, we are going to start Terraform, which is yet another configuration management right tool. And we first have to understand right the way Terraform thinks, right? So how Terraform thinks differently than Ansible, that we have also to understand. So I will right walk you through the cycle right that Terraform uses, and some important aspects right in terms of right how the state management and everything happens out there. Okay. Any questions, queries before binding up this session? दीपक, जहाँ तक मुझे पता है एंसिबल में जो कुछ ट्राई कैशे भी होता है, मतलब जैसे कुछ फेल हो जाए तो रोल बैक करना है, ऐसा कुछ? बेसिकली सी अगर आपको जो भी YAML का जो रीट्राई करके एक फाइल बनती है, ठीक है, तो वो रीट्राई फाइल यूज कर सकते हो. तो रीट्राई फाइल क्या करेगा, जिस जहां से वो फेल हुआ राइट वो चीजों को रन करेगा. ओके. तो अगर आप वो देखोगे राइट, यहाँ पे तो नहीं, हमारे उस वाले प्रोजेक्ट में बना हुआ है राइट, cd EC2 लॉन्च में. I think you're talking about this right, retry. ओके, लेकिन मतलब रोल बैक कैसे होगा? मतलब जैसे कुछ चेंजेस हो गए, मतलब आइडियली 5 स्टेप्स हैं किसी प्लेबुक में, और 2 चेंजेस हो चुके हैं और थर्ड पे फेल हो गया. So that's what I saying right, where this right tags comes in picture. ठीक है, तो आपका हर एक्शन का आप टैग दे सकते हो राइट, कि ये किस पॉइंट है. तो टैग स्पेसिफिक आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो क्या करेगा, बाकी को फिल्टर आउट करेगा, बाकी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. अगर आप चाह रहे हो कि आपको राइट जो पुराने आपके जो इंस्टॉल हो गए हैं राइट उसको हटाना है आपको, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए रेस्पेक्टिव टर्मिनेशन एक्शन होंगे राइट. बिना उसके वो कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा. You have to write मतलब something वही right मैं for that. करेक्ट. So we have to write a code, yeah. You have to write code and tag them right for right clean up, और उसके लिए अलग कोड होना चाहिए. ठीक है, Okay. और उसके प्रॉपर टैगिंग होना चाहिए, so that if you want to maintain in the same right you can say rules right in the same playbook, so you can either write 2 different YAMLs right, one for terminate and that way segregate, और अगर सिंगल में रखना चाहते हो तो टैग से सेपरेट कर सकते हो आप. ठीक है. Okay, so while calling we can use that tag, yeah. Yes. Okay guys, then I will bind up the session today. Okay guys, any last questions that I can take? Yes, Deepak, put the recording, please. Yeah, sure. I will share this recording today. Okay. So yesterday's recording I have shared. Okay. Today's recording I will share. Okay. In some time. Okay guys, bye. Thank you. Thank you.